it's a beauty when two brands come together. Well, I'm talking about Anomaly and Nykaa. जी हाँ, ये दो बड़े brands हैं जिन्होंने collaborate किया है for some very interesting products that will now come to India. As you're aware, Anomaly is a brand which is founded and supported and rooted by none other than Priyanka Chopra, of course, a superstar, global icon, somebody who's really passionate about what she does. And she's partnered with Nykaa, which is again a wellness and health beauty brand, which is in India and been doing very well. I have with me two of the most important people in this collaboration. Priyanka, thank you very much for being on the show. Anchint, thank you. आपने हमें समय दिया. Priyanka, let me first ask you. Anomaly is a brand जो आपने globally launch किया पहले, and India में लाने का अब आपने opportunity समझा. पहले तो इस brand को कहाँ से, where did you think you got the inspiration to, build this brand पहले, and then India में लाने का अब क्या purpose है? Where do you see this brand grow from here? Well, मुझे business में थोड़ा सा interest शुरू हो गया था जब मैंने फिल्में produce करना शुरू किया. तो I got into the business of entertainment. और beauty एक बहुत important और अहम हिस्सा है मेरे my job, everyday job का, जहाँ पे मैं जब कुर्सी पे बैठती हूँ, the best hair and makeup artists जो most expensive, most luxurious products मेरे ऊपर use करते हैं, जब multiple red carpets में हम जाते हैं, तो मेरा जो expectation of a product that I use है वो बहुत high था. And जब आप देखने जाओ, मैं beauty के बारे में सोच रही थी, मैंने जब फिल्में करना शुरू किया, प्रोड्यूस करना शुरू किया, मैंने बोला कि मैंने इन्वेस्टमेंट्स से शुरू किया पहले अपने बिजनेस का, बिकॉज आई डोंट नो वेरी मच अबाउट इट, मुझे सीखना ज़रूरी था. तो जैसे बम्बल में मैंने इन्वेस्ट किया, वो उसको इंडिया लाए, डिड रियली वेल, इट चेंज द लैंडस्केप ऑफ डेटिंग इन इंडिया, एंड दैट रियली गेव मी कॉन्फिडेंस कि अब मैं अपने व्हाट्स माई नेक्स्ट आइडिया. तो जब पैंडेमिक हुआ, हम लोग घर पे बैठे हुए थे, तो दिमाग तो खुराफात होता ही है. सो एट दैट टाइम आई रियली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ब्यूटी, बिकॉज आई नो ब्यूटी. मतलब 22 साल का करियर है मेरा, और उस 22 सालों में आई हैव मेट द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, हेयर पीपल इन द वर्ल्ड. तो मैं ब्यूटी के बारे में सोचने लगी, स्किन केयर, मेकअप, हेयर रियली इंटरेस्टेड मी, क्योंकि मेरा अपने बालों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिश्ता रहा है. मेरे बाल अगर इफ़ आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे, थोड़ा कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है, और मेरा ही नहीं, सिर्फ हर इंसान का होता है. अगर थोड़ा सा आपके बाल अजीब लग रहे हो, आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल जाता है. सो माई रिलेशनशिप स्पेशली, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ और मैं एंटरटेनमेंट में हूँ, तो थोड़ा सा डायरेक्ट रिलेशनशिप था. एंड व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिस तरह के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, जिस तरह के शैम्पूज, कंडीशनर्स मैं इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, वो इतने एक्सपेंसिव थे कि आम इंसान नहीं उनको ख़रीद पाता. वो आपने गैप देखा, तो वो गैप मुझे इंटरेस्टिंग लगा. तो जब मैंने वो गैप आइडेंटिफाई किया, मैंने और रिसर्च करना शुरू किया कि जो आपके सुपीरियर फार्मूलाज हैं वो इतने एक्सपेंसिव हैं, उनको हम कम प्राइस पे कैसे लेकर आएँ, बाय हैविंग पैकेजिंग जो एक्सपेंसिव ना हो. और हम अपनी पैकेजिंग को 100% रिसाइकल, 100% प्लास्टिक ट्रैश से बनाते हैं. तो वो ट्रैश ओशन बाउंड है, चाहे लैंडफिल से है, लेकिन वो प्लास्टिक ट्रैश से बनता है जो दुनिया में बैठा हुआ है अगले पता नहीं कितने हजार सालों तक. So it's great. I mean, good for the environment. Exactly. So sustainable, affordable and clean. So clean as in vegan, उसके अंदर कोई भी गंदी चीज़ें नहीं है, जैसे पैराबेल्स हो गए या सल्फेट्स हो गए या मिनरल ऑयल हो गया, जो आपकी गाड़ी में होना चाहिए, आपके बालों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग शैम्पूज़ में होता है अजीब अजीब चीज़ें जो केमिकल्स होते हैं. इस प्रोडक्ट में वो सब बिल्कुल नहीं है. तो दिस ट्राइफैक्टर वाज द वाइट स्पेस जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और मैं अमेरिका में रहती हूँ अब, तो मेसा जो है वो एक बहुत बड़े ब्यूटी इंक्यूबेटर हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं. तो मैंने उनके साथ मुलाकात की एंड कहा कि ये हो सकता है. उन्होंने बोला ट्राई करते हैं. करते करते हो गया, and then we launched in America about 2 years ago. Wonderful, and the reception has been amazing, isn't it? It is. We are with multiple partners, including Walmart, Target, Amazon, CVS in America, and now we brought it to India with Nykaa, who is obviously the leading brand when it comes to beauty in India. And थोड़ा वक्त लग गया, because obviously pandemic था. I think it's okay. इतना भी वक्त नहीं लगा यार, 1.5 साल में ले आए. 2 साल में roughly, yeah, okay, 1.5 साल. हमें प्लानिंग करते करते तो हमको 6 महीने लग गए. No, but not bad. गए. Okay, so affordability, yeah, well, affordability is one of the important elements. And India, हम जब इतने business leaders से बात करते हैं
जो इंडिया में बिजनेस करते हैं. Of course, it's a huge opportunity, but at the same time, बहुत challenging market भी कहते हैं. So, you know, when you come to India, obviously you need to know value-based, cost-conscious people. उनको ये ब्रांड कैसे देखना चाहिए? Is it an affordable brand? Because, you know, आजकल लोगों को aspirations बढ़ रहे हैं. So, they want luxury. But at the right price. You know, it's very complex and dynamic. So, इसकी positioning कैसे आप कर रहे हो? Which is why Anomaly makes the most sense. So for someone who's aspiring to say कि अब मैं brands के नाम नहीं बोल सकती, लेकिन जो बड़े बड़े brands हैं जो आपको 4 times इसके price पे मिलेंगे, Anomaly के price पे मिलेंगे. वो ही है. Exactly. Are you like? And I'll tell you why. And I can say it because I use it. I only use Anomaly. I've used it for now 3 years because I was the lab rat. So मैं तो lab rat थी. मेरी पूरी family भी lab rats थी. But I think that is where it lives. जो आपका aspiration है कि मुझे ये सबसे amazing products चाहिए, लेकिन वो इतने expensive है कि आपके wallet में छेद हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी packaging पे बिल्कुल खर्चा नहीं किया. Our caps are 3 cents. That's all we spent on each cap. So it was really relatively cheap for our packaging. तो हमारे budget में we had enough to be able to have superior formulas. So it's really not the looks that you should go for, but the real product. Absolutely as you're not. saying. Please, I mean, if you start looking at looks, and you should please read the ingredients of the products that you use. Okay, so great. So you're saying कि आप सब कुछ दे रहे हो in terms of what a good shampoo or a if superior. If you aspire for a superior product, you can get it at a democratized price. Okay, all right, wonderful. So democratization in this business is what you're bringing. Great. Exactly. Mr. Nair, so when you think of your brand, 10 साल से Nykaa has been in this business. I know there's no brainer that you've caught up with somebody who's a global icon to you know, come and collaborate with you. क्या expectations हैं? किस तरीके का response आप expect कर रहे हैं? And what's been your reading of this market, this segment, because you see it very closely? Yeah. So I think we've been in the business of beauty now for about 10 years. Right. And you know, we like to think of our mission also as that of democratizing access. And we think, you know, prior to Nykaa, it was difficult for consumers in smaller towns to get access to some of the best brands, whether they were global or domestic. And what Nykaa has done is that we've allowed consumers to learn and also to experience brands that otherwise would not have been possible. So that's been our mission, similar to what Priyanka's mission has been more specifically when it comes to hair care. Right. So we saw that there was a meeting of the minds. And of course, Priyanka being a global icon and being a representative of India on the global stage is something that really caught our eye. And you know, for us, it was about, you know, that's something that we thought would really resonate with the Indian consumer. But that's not enough, right? Just to be a celebrity is not enough to sell, or not to sell, but to build a brand for the long term. And that's when we started interacting with Priyanka and her team, and we realized just how much passion Priyanka has for this brand and for this business. And I think that's what's exciting to us, and that's what gives us comfort that this brand has the life to last for many, many years in the Indian market. So I think hair care is the fastest growing category within beauty. Exactly. Yeah. You know, Indians have cared and had many home recipes and home do-it-yourself solutions for hair care for millennium, and now it's back in focus. And Indian consumers are looking for very high-quality brands at affordable prices, and I think that's where Anomaly is a perfect fit. All right, तो perfect fit है ये उनके brand के साथ भी, which is great. So two like minds come together for a same cause. Priyanka, आपने entrepreneurship की बात की, and as a business, you said, you know, you started to think around business about few years ago, और अब आप business में ज़्यादा interest भी दिखा रहे हो, and you've got some good results going for you. So clearly, this is the start of it, right? I mean, hair care is the first stepping stone to something bigger that's coming. क्या thoughts है? Where do you see this grow? What is the kind of your understanding of how India and the world is moving towards this particular vertical, I would say? I think especially in India, it's such an interesting time, you know, because you have, we're living in the age of information. जहाँ पे अभी वो वक्त गया जहाँ पे आप हमारे जैसे बरेली में बैठ के, छोटे शहर में बैठ के, हमको मालूम नहीं कि बेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमको मालूम नहीं कि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट चाहिए, वो दिन चले गए. अभी because of like Nykaa,
यू हैव छोटे शहरों में भी आपको मालूम है कि बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं और आप इंस्पायर कर सकते हो कि मुझे भी वो वाला प्रोडक्ट And यूज़ afford करना कर है सकते एंड अफोर्ड अब कर सकते हो. बट द न्यू generation which is living in this age of information also cares about what they are using. You know, they care about कि इसमें ingredients क्या हैं. वो ज़माना गया जहाँ पे हम लोग we used to see the most shiny, most expensive thing and say मुझे तो सिर्फ वो यूज़ करना है. अब ये जो younger generation है और ये जो more woke generation जिसको कहते हैं वो पढ़ते हैं ingredients और वो जानते हैं कि मुझे सही चीज़ चाहिए एंड वो सही चीज़ प्रोवाइड करना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू आई थिंक इन माई एज अ एंटरप्रेन्योर उस जर्नी में मैं बस अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मैं कहाँ पे बाउंड्रीज पुश कर सकती हूँ, कहाँ पे चीज़ें क्रिएट कर सकती हूँ जो नहीं एग्जिस्ट करते. एंड द एवर चेंजिंग इंडियन लैंडस्केप एंड द इंडियन कंज्यूमर इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी राइट नाउ. श्योर. सो इंडिया ऑफ कोर्स इज एन इम्पॉर्टेंट मार्केट. आपने इसको यूएस में लॉन्च किया है और अब इंडिया में. More markets because obviously it's a global, it can be a global product and why not? I mean, why leave out some other country? I mean, मैं बड़े plans रखती हूँ लेकिन मैं cautiously चलती हूँ. I've That's always a good been business always person's. but मैंने तो वो अपनी acting career में भी किया था. तो मैं businessman भी नहीं थी तब. Business person, sorry. But I think I've always been very cautious. मैं फूक फूक के चलती हूँ. I like taking small steps. जब हमने अनोमली को लॉन्च किया था हमारे सिर्फ 8 प्रोडक्ट थे. फिर हम धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं, अलग अलग स्क्यूज़ लॉन्च कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, एक लॉयल कंज्यूमर बेस क्रिएट कर रहे हैं. तो आई मीन आई एम होपिंग टू प्ले द लॉन्ग गेम विद अनोमली एंड आई एम ऑल्सो होपिंग दैट आई विल बी एबल टू create more businesses and create other spaces जिनको मैं push कर सकूँ. So the India and America are not the only markets. Of course, we want to grow, and we're hoping to have amazing collaborations with Nykaa and multiple partners around the world. Of course, it's going to be a partnership where that's how you grow. And I know आपने अभी कहा कि collaboration आपके लिए बहुत important होता है कोई भी business करने के लिए. And I think it's in that sense a win-win. You said 8 से आपने शुरू किया था और बढ़ गए products. How do you see the male grooming market? I think वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त growth हमने पिछले कुछ सालों में देखी है. And I think the statistics say that शायद वो ज़्यादा तेज़ और अगले 10 साल तक बढ़ेगा over a female grooming market. What do you have to say? और उस area में क्या आपका contribution होगा? Well, exactly why Anomaly is gender neutral. ये अनोमली सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है. अनोमली जिसके पास भी बाल हैं उसके लिए है. अगर आपके पास बाल हैं तो आप अनोमली यूज़ कर सकते हैं. और हमको बहुत सालों से ये गलत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बताया गया है कि लड़कों के बालों की नीड्स अलग हैं, लड़कियों के बालों की नीड्स अलग है. बाल होते हैं, बाल डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वो उसी चीज़ से बने होते हैं, उनकी वही नीड्स होती हैं. तो आप चाहे अपने बच्चों के लिए यूज़ करें, ये अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स के लिए यूज़ करें, सब यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वाज आल्सो वेरी यूनिक अबाउट दिस रेंज. एंड द सेकंड थिंग आई थिंक इज़ the male grooming market. Why not? Why is vanity reserved just for women? First of all, patriarchy ने हमको ही सिखाया है कि आप 16 श्रृंगार करते रहो ताकि आपको कोई appreciate कर सके. The poor guys feel left out, yeah. That we also want to look great, we also want to feel good, and why not being able to groom ourselves the way we want to? So my question hence was I कि think आप उस direction में ज़्यादा focus करेंगे क्योंकि बहुत since it's booming, you understand and you feel for it. Well, this is the start of it. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि there will be a range for specifically men that I'm doing. I have created a line जो सब इस्तेमाल कर सकते हैं. And genderless है ये. So that is my first step into being able to say that I think it's a really interesting time to cater to, male grooming and men who are interested in having a sense of confidence and feeling and using products that have only been catered to women so far. अंजित, ये सेक्टर, ये सेगमेंट आपने कहा ऑफ कोर्स ग्रो कर रहा है बहुत अच्छे से. आपके रिजल्ट्स भी अभी रिसेंटली आए, दे हैव डन वेरी वेल, सो कंग्रेचुलेशंस. आगे फोकस और बिजनेस को लेकर किस तरह से योर आउटलुक इज, बिकॉज समवेयर यू सॉ मार्केट नॉट रिवॉर्डिंग नायका, IPO प्राइस जिस पे लॉन्च हुआ था उससे नीचे आ गया है. तो investors want to know what is the future looking like, have they made a mistake investing in it or not. I mean, आपका overall business plan आगे in terms of how healthy of balance sheet will be, collaborations like these will obviously help. So
व्हाट डज इट ट्रांसलेट इनटू? कैसे इसको हम नंबर में या क्वांटिफाई कर पाएंगे? No, look, I think we will focus on the business, and it's partnerships like these that help us to succeed and to do better and to build a better company and to also finally deliver to our consumers what they're looking for. We are a consumer backwards company, and we start with what does the consumer want, and our focus is on that. So I think it's with our constant focus on innovation, on bringing the best brands globally into India. If we keep doing that right, we will continue to build a good, strong business. Now, with regards to the results, yes, I think you saw the results yesterday. They were good numbers we put out, and we're going into an October, November, December quarter, which is a festive period, which tends to also be a good season for all retailers. So I think we're optimistic about the coming quarter. But I think longer term is what our focus is on, building a company for the longer term. And to do that, you need to always think about building the business in a sustainable way and doing things the right way. And for us, doing the things the right way include doing right by our brand partners like Priyanka, like others, doing right by our consumers, and finally doing right by our shareholders. So I think that is the focus, and we'll continue to work on that. Okay, so focus on that, absolutely. Priyanka, I can't let you go without letting us know about your new project. आप 3 साल बाद इंडिया आए हो, कोविड के बाद I think first trip है, so the excitement of course we saw about craving to come to India, your hometown. So how is it being back here, and how long are you going to be here? आपके अब क्या projects हैं that are coming up, if you want to share with us? अभी तो ये छोटा बहुत टाइट ट्रिप रहा है. इट इज़ जस्ट फॉर अनोमली एंड आई एम हियर इन मुंबई जस्ट फॉर 4 days. लेकिन इट वाज जस्ट सो नाइस टू लैंड इनटू बॉम्बे. बॉम्बे की हवा, बॉम्बे की स्मेल. वड़ा पाव खाया कि नहीं? खाया, वड़ा पाव खाया मैंने. आज लंच के लिए मैंने पाव भाजी खाया. थोड़ा ज़्यादा खा लिया. पैंट जिप नहीं हो रही थी मेरी आफ्टर lunch. It's But okay. It's It's okay. worth it's it. okay, you know? It's worth it. But it was just so nice to come back, meet my friends, my family, my team. I haven't seen so many familiar faces for such a long time. घर आना हमेशा homecoming अच्छा होता है. And especially to come with a brand like Anomaly, जो is entrenched in the Indian tradition of, the foundation of your hair needs to be strong. इसलिए Anomaly में भी styling products वगैरह कुछ नहीं है. Because it is about every product needs to, जैसे हम लोग, मेरी नानी मुझे अपने पैरों में बैठ के तेल लगा के चोटी में तेल लगा के स्कूल भेजती थी. And I used to get so irritated that time कि तेल लगा के स्कूल जाने की क्या जरूरत उसके लिए बाल है. उसकी वजह से देखो अभी. That's what I'm saying. And that is what Anomaly is based in. But it's a very exciting time. I love coming back. When it comes to my projects, I have 2 big ones that are coming out next year. One is a romantic comedy which comes out I think around May. It's called Love Again. It is Celine Dion's acting debut, which I'm very excited about, that I'll go down in history in being in Celine's first movie. It has also Sam Heughan in it. It's a really cute movie. And then the second one is Citadel, which is an amazing show on Amazon Prime, which should come like 3rd quarter next year. That has Richard Madden, Stanley Tucci, me. It's a really ambitious project. So those are my 2 big ones, and other things I'm developing and working on. Anything in India? Well, the movie I'm doing with Farhan, Katrina, Alia, and Zoya, which I'm very excited about, which we should be shooting maybe end of next year, which is called Jile Zara. Jile Zara, of course, we saw those posters come out, and I think आप ही नहीं, पूरी दुनिया is waiting for that. So, before I let you go, Priyanka, एक आखिरी सवाल, and सब लोग आपको देखते हैं, you're an inspiration, you're a global icon, and I mean everybody, I'm not talking about just women, I think all of us are so proud of you, and we look up to you for all the work that you do. आपके लिए कौन है inspiration आज के तारीख में? Because I know at every juncture and stage of our lives, I think हमारे inspiration बदलते हैं. Is there a constant inspiration or somebody that you look up to at this point in time? I mean, I think I meet different people that I admire all the time. True. And मैं नई नई चीज़ें करती हूँ, and वो नई चीज़ें करने की knowledge मुझ में तो है नहीं, तो मैं अपने collaborators से बहुत inspired होती हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत सीखती हूँ. Like for example, Anchit sitting here right now, the 2 days, that 1.5 days that we're going to be spending together, मैंने इतनी सारी चीज़ें इनसे भी सीखी हैं. The Nykaa team, जैसे मेसा, जब मैंने business इसके बारे में शुरू किया, I leaned so much on them to learn. So I get very inspired by people who know things that I don't, and that can be in everyday life. हर चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है इंसान को, लेकिन मेरा बस इतना सा ही ख्वाब है कि मैं हर चीज़ अच्छा करूं. तो I get very inspired by people who know more than me about things that I want to do.
Okay, always ready to learn. Thank you so much, Priyanka. It was lovely speaking. Thank you. So nice. Achin. Lovely. Cheers. Thanks.